Hello everyone. Welcome back to the post-contest discussions series. So we'll be taking status 154 here and we'll be discussing division 4 first 5 problems. So let's start with the first one. The first one says that you want to go to the Coldplay concert along with your N friends, okay? And you are buying tickets for everyone and each ticket costs 5,000 rupees, okay? You have to calculate the total amount. So this is simple. Just the thing is, you have to buy total n plus one tickets, right? Because you are there and your friend is also there. So there will be a total of n plus one people, and total you have to buy n plus one tickets, and each ticket costs 5,000 rupees. So you can simply print n plus one into 5,000, right? So since there are only one test case here, I have just taken the input and printed the value, which is the answer is n plus 1 into 5,000. Right. I hope the code is visible. So that was all for this problem. Right. Let's move to the next one. This problem says that Sushil is a diabetic patient. He is only allowed to eat at most K calories in a day. However, he likes to eat sweets a lot. And there are n sweets in front of him, and the ith sweet has calorie AI. Okay. And Sushil will eat in sweets in the order. If the ith sweet would take him over his daily calorie limit, he won't eat it, and he will not eat any further sweets. Okay, so you have to tell maximum number of sweets Sushil can eat, right? So he is eating in order, right? So let's take this test case. Oh, just a second. So, in this test case, it says that Sushil is eating in an order, right? This means that so Sushil is eating in the order. That means that he will pick up the sweets in this manner, right? He'll be first eating this, and then this one. So, this simply means that you are given a calorie limit. That is your calorie budget. Let's say that is K, right? Calorie budget is K. So, if you are eating in an order, and if you find that currently the upcoming sweet, let's say it costs X to you. So if your current calorie count is, let's say it is current, okay, and current plus this X, if anyhow this value is like greater than your calorie budget, daily calorie budget X. This means simply this simply means that you can't eat the क्या कहते हैं, that sweet, right? That's just yes. So you can't eat that sweet, right? So you just have to see that when this condition is met, what you can do is you can't eat any upcoming sweet after that. So the question is simple. You just have to see that how many sweets you can eat. So the point till which you can eat is like, if you can see it like this also, like if the current value and plus the current value so far and your upcoming sweet value, that is X. If this is less than equals to K, right? You can pick up that sweet or you can eat it, else you can't. Okay. So this is more or less the explanation part, and the implementation it is here that. So these are the two values N and K. This is for each test case, right? I have taken test cases input here and I've called the solve function to
So this was for each test case. So I have taken the array input here first of all, and then this is my current calorie and this is my answer. So when I'm traversing over the array, so if your current calorie plus the upcoming value, that this is X, my current plus X, right? If this is greater than K, then what I'm going to do, I'm simply going to break that. I can't pick up any sweet after this, right? So else you will do just increment your calorie by this current value and you will do answer plus plus. And at last you can simply print your answer. So this is more or less the solution part for this. Let's move to the third question. So the third question says that Alice and Bob are playing a game and there is an integer x which is initially 0. On each turn, Alice or Bob can choose can increment x either by 1 or 2. Okay. And the game ends as soon as x is greater than equal to n. And Bob wins when x is equal to n and Alice wins otherwise. That means that if x is greater than n, then Alice is going to win, right? So if the both players play optimally, predict the winner. So this question was more about like you have to like try out multiple things, like multiple test cases, and you can like finally conclude that. Uh, let me tell you what I'm trying to say. What I'm saying is so you are basically given x. So x is 0 initially, right? So x is 0 initially. So so the thing is like Alice is going first and Bob is going second. Okay. So what you can do is like either you can either add a plus one or plus two. Okay. So the thing is like Alice begins first, right? So like if Alice begins first and what is input given here is input is only n, right? Okay. So let's say if n was 1, okay? Let's say if n was 1, that means only Alice can play and if Alice like if Alice plays optimally, अगर Alice को जीतना है, right? Alice को जीतना है. So obviously it is going to like whatever he or she like whatever. Let's say it was something that this person. तो वो plus 2 add करेगा, right? Of course. मतलब जीतने के लिए. Why? Because the winning condition for Alice is x should be greater than n. Right? अगर वो plus 1 यहाँ पे add करता है, x becomes equals to n and Bob is going to win. So for Alice to win, the condition is that कि वो plus 2 add करे, ठीक है? अब now let's analyze कि what if, ठीक है? Both players are playing optimally. So considering that, let's see what if कि अगर n equals to 2 पे क्या होता, ठीक है? So let's take n equals to 2. So at n equals to 2, मेरे पास क्या ऑप्शन है लाइक एलिस क्या कर सकता है व्हाट एलिस कैन डू इज लाइक इट कैन ऐड अ प्लस 1 और अ प्लस 2. अगर वो प्लस 2 ऐड कर देता है तो x becomes equals to n, राइट? तो कोई मतलब वो ऑप्टिमली ये चांस चूज नहीं करेगा. व्हाट ही और शी विल डू इज टेक अ प्लस 1. so she adds a plus 1 and x becomes 1 now. ठीक है, x becomes 1. now Bob की चांस आएगी. so what Bob will do optimally is obviously he will take a plus 1, right, to win, because the winning condition for Bob is x should be equals to n. Okay. So considering that for n equals to 2, anyhow Bob is going to win, right? Anyhow Bob is going to win. Okay. So let's see this one. So if anyhow Bob is going to win, let's declare this Bob is the winner for n equals to 2. Okay. Let's take another scenario. Let's take n equals to 3. Okay. n equals to 3 के लिए क्या होगा? Either first Alice is going to take the chance. Alice can take a plus 1 or plus 2. If Alice take, let's say, plus 2, okay, what Bob is going to do? Bob is going to take a plus 1 and Bob wins. Okay. If Alice takes a plus 1, then Bob is going to take a plus 2. In both the cases, Bob wins. Right?
let's analyze it further. So like by dry running these test cases, like you will gradually feel that uh, what you will feel that Bob always like, Bob always has a winning strategy, no matter what n is, except for the case when n equals to 1, except for n equals to 1. Like this is the exception. Okay. So if you are like going to see multiple cases, ठीक है? Like we were talking about n equals to 4. तो अगर हम n equals to 4 की बात करते हैं, तो what Alice can do, right? Alice can take a +2 or a +1. तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज 2, लाइक 4 - 2 is 2. तो अगर बॉब यहाँ पे +2 ले ले तो बॉब हैज अ विनिंग स्ट्रैटेजी. बट इफ एल्स टेक्स अ +1 and if Bob takes a +2 here, then it is going to be some it will sum up to 3, right? ये 3 बनाएगा. So what Alice will do? Alice will do on the next move. Alice will take a +2 playing optimally and Alice would win, right? But instead of here like playing optimally, like if Bob sees कि यहाँ पे Alice जीत सकता है, so what he will do? He will take a +1, okay, and then no matter what Alice takes, like either +2 or a +1, Bob is going to win, right? So this like concludes that no matter what is the value of n, like if n is greater than 1, Bob always has a winning strategy, right? Like if you are going through multiple like test cases, then you will realize this thing soon. Like if you try run for like n equals to 1 to 10, so you will find out that Bob is going to always win. So with this assumption, like the thing is happening here is like both players are playing optimally. So अगर बॉब को ये लगता है, see what I concluded is कि अगर बॉब को ये लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो वो कॉन्फिडेंटली +2 लेता है, ठीक है. अगर बॉब को ये लगता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा तो वो बचने के लिए +1 लेता है एंड अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में एलिस को पहुंचा देता है जहां पर नो मैटर व्हाट एलिस टेक्स आइदर +2 और a +1, राइट, बॉब इज गोइंग टू विन. ओके, so this was more or less the solution for this, that if n is 1, then Alice is going to win and else Bob is going to win. Okay, so I hope this was more enough like for the explanation part. Let's see the next question. So the next question says that you're given an array and you have to perform the following operation as many times as you want. Like you can choose a range from L to R and choose a number X. Okay. And you can do either of the operations, like you can set all the numbers in this range from L to R to a value AIs or X, and else what you can do is other operation is you can set it to GCD of AIs or X, AI comma X, right? So you have to like compute the minimum number of operations required to make all the elements in the array equal to K. Okay. Okay, fine. So what is given to you is so we are given with the thing that you are given two values, right? You are given n and you are given a k. Okay. And also what you are given is what you are given an array. So let's say your values were like 2, 6, 4, and 1. Okay. So now the thing is, what you can do is the problem statement says that you can perform either of the operations. Like either you choose a range, like range is contiguous. Okay. Like if let's say if I choose this range and if I have to choose a number X. So what I can do is either I can set this whole range to AIs or X. AIs or X. Okay. 6 XOR 4 and 4 XOR 4. Or what else I can do is secondary operation is you can set this to
GCD of 6 comma x, right? Like this should be x here, right? X and x. Okay. So you can set it to GCD of 6 comma x and GCD of 4 comma x. So ultimately, so far this is the number of like the operation which is defined, and you have to find the minimum number of operations such that all the elements in this array become okay. Okay. So this is your task so far. Okay. Now what you can do here is just see that like my claim is key. Just see this case key, like if in the array, like if this is your array and all elements here are equals to k. Okay. Then the minimum number of operations is going to be 0 simply. Okay. So this is like your case one. Okay. Now my claim here is like if you take any array, okay, if you take any array, like I hope that you must be aware with the thing that GCD of 1 comma any number is going to be 1, right? So moving with this thing, like at any operation, I choose L equals to 1 and R equals to N. Okay. Like in one based indexing, this is my first index and this is my last index. So I choose the whole array and I choose X equals to 1. Okay. And I'm doing the type 2 operation. What is the type 2 operation? I will set each element to GCD of X comma AI. Right. So what this thing takes me to, obviously X is 1 here, right? X is 1 here. And GCD of 1 comma anything is going to yield me a 1. So this means that whatever might be the element present in my array, right? Everything is going to be converted into all ones, right? All ones after one operation. This costs me one operation, right? Now let's see what can be done ahead. Now I say that what you do is कि next operation हम क्या करते हैं? I will choose the same L and R, and what I will choose is कि I will choose the same L and R. Okay. And what you can do here is like since all elements are equal, right? Since all elements are equal. So what you can say here is since all the elements are equal here, so like let's say that this is my AI, okay? So my first operation was that you can choose a X and do a AI XOR X. Okay. Let's say that it yields to me some value Y. And what I want is I want to make this thing, I want to make AI XOR X to be equal to K. So what is my desired operation? My desired operation is somehow this value, like this value becomes equals to K. Okay. So this, like if I perform a XOR of AI on both sides. Okay. So by the property of XOR that AI XOR AI is going to be 0 because XOR yields 0 on same numbers. So this is going to be cancelled out. And what I get is like X equals to K XOR AI, right? Moving with this thing. So if I'm going to use this result here, okay. So for each distinct element present in this array, right? For each distinct element, I will apply one operation and I will find out
a value x. Okay, and that will be nothing but k's or ai for each I, right? This I would be doing if my ai was distinct. But in this scenario, like after applying one operation, I have made them all equals to 1. Okay. That means that 1 XOR k is going to be my value of x. Okay. This simply means that if I choose L equals to 1, R equals to N, and X equals to 1 XOR K. Okay, 1 XOR K. So this means that this thing is going to cost me one operation. And what would be the result? Result would be nothing but all elements in the array would have been converted to all Ks, right? So I hope this explanation is like clear. So this is the scenario where I'm going to take two operations. Okay. So what my claim is? My claim is that you bring me any array. Okay. So you bring me any array and I can like tell you, like I have shown you that any array can be converted to, like any array can be converted to all case in how many operations? In two operations, right? So this simply means that at a max there are going to be two operations, whatever the case may be, right? So like we have discussed so far two cases, like case where the answer was 0 and case where the answer is 2, right? So when the answer was 0, the condition was all elements in the array are beforehand equals to k. So you don't have to perform any operation. The answer is going to be simply 0. And in worst case scenario, the answer is going to be 2. Now let's see when the answer is going to be 1. So for the answer to be 1, what can be the cases? The cases can be like either you can use the GCD operation, okay? Or you can use the XOR operation. Only this is the case. So if you want to use the GCD operation, this simply means that all the elements present here, like A0, A1 till AN, right? So that means that all the operations, all the numbers present here, right? That is AI, comma X, some X. This GCD of this thing is going to be like X, like K, right? So this simply means that if I have to perform only one operation, so what must be these values? Okay, these values should be nothing but multiples of k, right? Like if AI is a multiple of k, that means it is going to be some number. Let's say that number is alpha. Okay, let's say that number is alpha and k. Okay, so if AI is like alpha into k, this simply means that if I take a GCD with k itself, right? GCD of AI comma k. This is going to yield into GCD of alpha k comma k, and henceforth it is going to be giving me k itself. So this is the only operation which I can do to make all the elements equal by performing the type 1 operation, sorry, type 2 operation. That is the GCD one, right? So no matter whatever the array may be, if the array is like कि मान लेते हैं कि बीच में कुछ elements k हैं, right? And there are some elements which are multiples of k, like 2k, 5k, and 3k. Only this can be the case when I take GCD of whole array and it comes out to be k, right? Only this can be the scenario. So if you have to use the type 2 operation specifically, if you have to use type 2 operation, right? And you have to make these elements equal. So what you can do is you can do nothing but
you just have to check that whether all the elements are multiple of k or not. So in this case, you are going to get 1 as your answer. That is the minimum number of operations. Minimum number of operations is going to be 1. Okay. Now let's discuss about the type 1 operation. So the type 1 operation is XOR. अगर मान लेते हैं कि मुझे XOR को यूज करते हुए सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है, राइट, एंड दैट टू इक्वल टू k. ठीक है. If I have to make all the elements equal to k, this simply means that, what does this simply means? This means that ki whatever must be the AI, right? Like what I can do is AI is or x, and I want to make it equal to k. Okay. As I have shown that x is going to be AI is or k. Okay. Moving with this thing, I can choose x as this. Okay. But also I want to apply this operation like only one time. Okay. I don't want to do it multiple times. Right? तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो the thing here is कि if, ठीक है, मान लेते हैं कि if AI was like something like if I choose a x, अगर मैं एक ऐसा x choose कर पाता हूँ, like for that x, all elements AI XOR k becomes AI XOR x become equals to k, simply means that I'm going to get my answer. तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि तो सारे एलिमेंट्स बराबर हो, राइट, लाइक 5 5 5 5 इस तरीके के सारे एलिमेंट्स हो. या फिर क्या केस हो सकता है? ऐसा भी एक सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर आर सम एज केसेस इन दिस केस. ठीक है. वो एज केसेस क्या है? जस्ट अ सेकंड. वो एज केसेस यहाँ पे ये हैं कि लेट्स से यू आर चूजिंग एक्स, राइट. एक्स तो एक ही होगा, एक्स एग्जैक्टली 1 होगा. तुम एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो दिस मीन्स दैट यू कैन चूज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स, राइट. तो अब वो वैल्यू, क्या ऐसी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो एरे में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स को एग्जैक्टली के बना दे? तो पहले ये देखो कि अगर पहले से कोई के एग्जिस्ट करता होगा, मतलब पहले से कोई एलिमेंट के इक्वल रहा होगा एरे में, दैट मीन्स दैट this value should like I want to be applying operation on that. Okay. Like let's come to this like after some time. What I'm trying to say is कि पहले तुम ये समझो कि मान लेते हैं कि there were some distinct elements in the array, ठीक है. But if those distinct elements, ठीक है, all the distinct elements, like all the distinct elements, like when these all elements are individually XORed with k, right, if they result into a common value x, so does this simply means that एक ऑपरेशन में मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को k के बराबर बना सकता हूँ? Is this thing clear? Just tell me a yes or no. Are we on the same page till now? ये चीज समझ आती है? Yes sir. किसी को भी कोई डाउट इसमें तो यू कैन आस्क, लाइक अगर ना समझ में आ रहा हो तो. द थिंग आई वांट टू से इज कि whatever might be the elements, like if there were 2 6 4 and 1, okay, and let's say my k was let's say 3, ठीक है. तो what I'm trying to say is कि हर एक ऑपरेशन के लिए अगर मैं x सुटेबल x निकालने चलता हूं तो what is that? That is 2 और 3, 6 और 3, 4 और 3 and 1 और 3, ठीक है. And what I'm trying to say is कि eventually
तो what are these? These are optimal values of x. तो अगर ये सारी values, like let's say this one x1, x2, x3 and x4, ठीक है, if ये सारी values equal आ जाती हैं, तो what does this simply means? This simply means that I can apply one operation and get all these value converted into all case. Yes or no? Yes. Yes. ठीक है. तो अब तो इसमें ये देखो कि हमको एक ऐसा x ढूंढना है, ठीक है. तो तुम इसमें ये सोच सकते हो कि सर ऐसा करते हैं कि जो एरे का जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, दैट इज a0, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, a0 कॉमा सॉरी a0 और k फाइंड कर लेते हैं, ठीक है. लेट्स से दिस वाज x1. तो ये अगर वैल्यू x1 है तो हम ऐसा चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि बाकी एलिमेंट्स के लिए ट्रेवर्स करते हैं एंड ai और k फाइंड करते हैं. एंड ये कहीं पर भी अगर नॉट इक्वल टू x1 पाया जाता है, सो व्हाट डज this implies? This simply implies that there are more than one values required of x, right? More than one values of x required. So this means this, ठीक है. मतलब कहने का मतलब ये है कि ai और x अगर x1 की इक्वल नहीं आया, what was x1? x1 was like जो फर्स्ट एलिमेंट को k में कन्वर्ट करने के लिए x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज x1. तो दिस सिंपली मीन्स दैट कोई और एलिमेंट कुछ और वैल्यू चाहता है, लेट्स से x2. सो इफ x2 इज नॉट इक्वल्स टू x1, दिस सिंपली मीन्स दैट कि हम एक ऑपरेशन में ये काम नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू मूव टू आवर वर्स्ट केस सिनेरियो व्हिच इज टू ऑपरेशंस, जो कि मैं समझा चुका हूं, ठीक है. ठीक है, तो एक ये सिनेरियो होता है, बट इसमें एक एज केस छूट जाएगा. व्हाट दैट एज केस कुड बी? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारी एरे थी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी एरे थी, है ना, उस एरे में कुछ ऐसा सिनेरियो होता. कैसा? कि मान लेते हैं सर हमको केक इक्वल बनाना था, राइट. तो मान लेते हैं कुछ कंटिन्यूअस केस होते हैं, ठीक है, लाइक के 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 एंड देन यहाँ पर कुछ कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं एंड देन अगेन हम केस होते हैं. एंड मान लेते हैं कि इसके बाद फिर से कुछ कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं एंड दिस सिंपली गोज ऑन, ठीक है. कुछ इस तरीके की अगर एरे होती तुम्हारी, तो ये जो सब एरे है लाइक दिस रेंज, डू आई नीड टू अप्लाई एनी ऑपरेशन ऑन दिस? नो, राइट. दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी जीरो ऑपरेशन. सिमिलरली दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी जीरो ऑपरेशन, राइट. और फर्दर अगर कहीं और के जो कंटिन्यूअस जो सब एरे है, दैट इज अगेन गोइंग टू कॉस्ट मी जीरो ऑपरेशन. बट ये जो नॉन इक्वल टू के एलिमेंट्स रह गए, इनके लिए मुझे ऐसा सोचना है कि मैं सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा सकता हूँ और मुझे सबको के में कन्वर्ट करना है. तो ऑब्वियसली अगर if this thing does not ends here, it simply means that I have to choose this subarray and this subarray separately. This means that I have to apply more than one operations, and this is not going to pass, right? I am searching the case where I can apply exactly one operation, so this is not going to be the case. So this simply means that कि अगर यहाँ पे मतलब लाइक कंटिन्यूअस केस के बाद, लाइक इफ आई हैव एनकाउंटर्ड अ डिफरेंट वैल्यू अदर देन के वंस, ठीक है, और अगर दोबारा मुझे लाइक सेकंड टाइम अगर मुझे ऐसी वैल्यू मिल जाती है, तो दिस सिंपली मींस दैट कि ये एरे मेरे काम की नहीं है. ओके, सो एन एच केस कुड बी कि some k's हो repetitively and some values हो, right? Those values could be like x, y and z. ठीक है, these should be continuous, okay? And again there are case, ठीक है. So this is an edge case, like in this kind of value, like in this type of array, what you can do is you can check. Now you can check that कि जो ये वाली जो range है, like this sub array like x, y and z, so whether
X XOR K is equals to Y XOR K is equals to Z XOR K or not. Like whether this condition is satisfied or not. If this is satisfied, you can you can safely say that you can convert it into all K's in one operation, else you cannot. So is this thing clear like so far? Like I have categorized into three cases, 0, 1, and 2. Like my answer is going to be 0 when all of them are equal to K, right? My answer is going to be 2 in the worst case scenario, and the best case scenario could be not the best case, but like the case where I can apply only one operation. So I have divided into two parts, like one with the type 1 operation, which is the XOR, and one with the type 2 operation, which is GCD. So the first type, like this 2 has an edge case. Okay, I have discussed that with all of you. So just tell me that whether the explanation is clear to you or not. कुछ और पूछना है जो नहीं समझ में आया हो so far? Just let me know. Yes or no? सर इसमें एक्स वाई जेड का जॉर तो सर मींस यूनिक नंबर का जॉर यूनिक ही होता है नहीं देखो let me explain this thing. Like this is interesting. You might think कि अगर x y z की वैल्यूज अलग है तो x XOR k, y XOR k and z XOR k. This is a good doubt actually. कि ये इक्वल कैसे आ रहा है, राइट? तो तुम ऐसे सोचो कि देर देर कैन बी सम रिडंडेंट वैल्यूज, मतलब जिनके 1 या 0 होने से फर्क नहीं पड़ता. मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई एक्स एंड ऑप्टिमल एक्स. तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? लेट्स से माई एक्स वॉज 1 0 1, ओके, एंड के वॉज लेट्स से 1 1 0 0, ओके. तो मैं यहाँ पे इसका जोर निकालूंगा, राइट? तो जोर निकालूंगा. तो like like it is going to be 1 here, 0 and a 0. Sorry, it is going to be 1 here and it is going to be like 0 here, right? So this is my XOR. But यहाँ पे कोई redundant bits भी हो सकती थी, like if you are going to see it bit wise, ठीक है? मतलब ऐसा भी हो सकता था. This is one case, right? ऐसा भी तो हो सकता है कि different values of AI पे, मतलब कि मान लेते हैं कि let's say that my answer, let's say my answer is 1 0 1 1 0, ठीक है? मान लेते हैं कि मेरी x की ऑप्टिमल वैल्यू निकल के आती है, ठीक है? तो अब कौन कौन सी ऐसी AI वैल्यूज हो सकती हैं जिनको XOR किया जाए k से, तो ये प्रोड्यूस करें. तो उसके लिए हम k को कुछ मान लेते हैं, ठीक है? k को हम मान लेते हैं 1001, ठीक है? तो सिंस इट इज ये 5 बिट का नंबर है तो एक बिट और लेते हैं, लेट्स से 1, ठीक है? तो 5 बिट ले लिए हमने. तो अब तुम इसमें ये देखो, I need first bit as set, like the MSB, right? MSB. I need this as set. This simply means that I have to put a 0 here. Okay. I need like this as unset. So this simply means that I have to put a 0 here, right? But I have to like keep this thing as 1. So this means that I have to put a 1 here, and this is 1. So I have to put a 0 here. This is 0. So I have to put a 1 here. Okay. So this gives me that, like if I take XOR of this, right, it's going to be 1 0 1 1 and a 0, right? What I'm trying to say here is
कि हमारे पास k की वैल्यू गिवन है ना, बट वी डोंट नो कि व्हाट कैन बी AI। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ आई डू x or k, so can there be some redundant bits? Like I'm thinking this way कि जो मेरा आंसर कंस्ट्रक्शन होगा, राइट, I don't know, like I could not come up with any example right now. But see, anyhow, अगर तुम ये मान के चलो कि whether those x, y and z are distinct, तो anyhow इनके लिए like I have specified the condition, right? कि if x XOR k is equals to y XOR k is equals to z XOR k, अगर ये चीज आ जाती है तो लाइक यू कैन गो विद दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें वो वाला सब केस कवर हो जाएगा जहाँ पे एक्स वाई और जेड बराबर है, राइट। बट यस सर। आई हैव सीन समवेयर कि जहाँ पे कुछ रिडंडेंट बिट्स आ जाती हैं आंसर में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे तुम एक ऑप्टिमल एक्स ढूंढ रहे हो एंड यू आर परफॉर्मिंग ए आईज और के, राइट। तो इफ योर के वाज 10110, आई cannot come up with an example right now. Hmm, एक सेकेंड, like if I put them zero, like अगर यहाँ पे जीरो है तो simply means that ओके ठीक है, मतलब मान लेते हैं लाइक कवर द ब्रॉडर केस, मतलब ये मैं आई कम अप विद दिस क्योंकि मैं एक एज केस के बारे में सोच रहा था, राइट। आई कुड नॉट कम अप विद द प्रूफ राइट नाउ, आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज द सिनेरियो, ठीक है, पोस्ट द डिस्कशन। Okay. So anyhow, so far the explanation is clear right now, right? Let's not waste time in this. So are you satisfied with this thing? Ki, like if we move with this thing, ki x XOR x XOR k, y XOR k, and z XOR k, you are going to anyhow land upon the same answer. Yes. यस सर। तो और किसी को कोई डाउट है regarding the explanation part of this problem especially? So let's see the implementation here. Such a question, right? So the implementation here is key. हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। सर। बोलो। सर ये तो रिजॉल्व होती है ना कि मतलब अगर ए बी सी डिफरेंट है उनका रिजॉल्व किसी के नंबर से करेंगे तो वो तीनों डिफरेंट आएंगे। हाँ मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कि वाई कंटेस्ट के टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट सम एज केसेस, ठीक है। तो बिफोर कमिंग अप ऑन दिस एज केस आई थॉट कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एआई हो, है ना, बट जोरिंग विद देम विद एक्स इज के इज प्रोड्यूसिंग अ कॉमन एक्स। तो ये मैं बस एज केस फिगर आउट कर रहा था, सो दैट वाज फॉर कंटेस्ट, ठीक है। आई अग्री विद यू कि जोर की यूनिकनेस जो होती है, लाइक जोर गिव्स यूनिक रिजल्ट, राइट। सो आई अग्री यस विद दैट थिंग, मे बी वो ना हो केस, है ना, जो मैं सोच रहा था वो नहीं होगा, मतलब आई जस्ट लाइक ओवर थॉट अ बिट, ठीक है। यस बट यू गॉट द आंसर, राइट, कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। यस, ओके, लेट्स सी द implementation. So as usual, like I have taken the test cases here and I've called the solve function for each test case. Like I have taken these two values n and k, okay, and then I have taken my vector, like, and you can take an array also. So I'm counting, so I'm dealing them case wise, okay. So this is my case A where the answer is 0, okay. So what is required for case A?
like all values are k, like this. Okay. So what I'm doing here is I have taken like the count of all elements which are equal to v of 0, like the first element. So this is an inbuilt function in STL, or you can also like traverse over the array, right? You can traverse over the array and find that if v of I is equals to v of 0, you can do a count plus plus. It is going to yield the same answer. ठीक है, anyhow. So in this scenario, जहाँ पे count n हो जाता है and v of 0, the first element is equal to k. That means that all of them are k. So I will simply print a 0. Okay. So I will print a 0 here. And I will return. Okay. Now I have again initialized my count with 0. What I'm doing here is I'm trying to see type 2 case here. मतलब when my answer is 1. So it is like case B when my answer is 1 and I'm seeing with type 2 operation. Type 2 operation means I'm trying to operate with GCD. Okay. So what was the condition required for GCD? All the values should be multiple of k, right? Multiple of k. Okay. So obviously I will again count those values like if I modulo k, like I is an iterator here. Okay. You can do it like this also. Okay. So if vi modulo k is 0, then I will do a count plus plus. That means that vi is a multiple of k. Okay. So if count is n, that means that all the elements are multiple of k. So I will simply print a 1 and I will return from here. Okay. Now further analyzing my array, now I will check the type 2 operation here. Sorry, type 1 operation. Okay. Type 1 operation here. So I will initialize again my count with 0. And so this is not required here. This is redundant. I have taken like two flag values here. Okay. One is FLG and one is flag. I will let you know like why I have used it. Set is also redundant. So what you can do is you can traverse over the array. Okay. You can traverse over the array and you can see like if vi is not equals to k. Okay. So this is the first time when vi is not equals to k. Okay. This is the first time. So I'm keeping this flag to mark that I only visit once the subarray. It means that there could be multiple subarrays with value not equal to k, right? जैसा मैंने problem में समझाया था. So just for that sake, I'm keeping this flag, and this flag is going to like contain my answer, like whether I can do it in one operation or not. ठीक है. तो ये यहाँ पे बस इतना ही कर रहे हैं कि the first time I encountered like vi is not equal to k, like the first time I encountered, तो ये जो मेरा flag था this one, like I will make it false. ठीक है, मतलब मैं इसको दोबारा नहीं आना चाहता इस केस में, right? And if this is पहले से false, ठीक है, अगर ये flag पहले से false था, this simply means that I cannot generate an answer with value equals to 1, right? One operation is not possible. So I will mark my answer flag as false and I will break from here. ठीक है. Now moving ahead. तो जब मैंने वो वाली कंडीशन एनकाउंटर कर ली कि लाइक आई एम एट द सिनेरियो वहां पे के की केस है सम वैल्यूज x y z and again case. ठीक है. I am at this stage. So what I will do, I will take current जो मेरा iterator होगा vi
तो vi is और k मैं इस वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ, है ना, एंड आई विल सी दैट while vi is not equal to k, है ना, I'll do an I plus plus. So I am iterating over an sub-array here, ठीक है. तो while vi is not equal to k, I will keep an I plus plus. And हर बार मैं एक वैल्यू निकालूंगा vi is और k, and I will see कि ये previous वैल्यू को इक्वल है कि नहीं है. तो अगर ये previous वैल्यू को इक्वल नहीं होगा, that means that there is a chance of multiple values of x are required. ठीक है. I can simply mark my answer flag as false and I can break. And finally I will see कि जो मेरा आंसर फ्लैग है अगर वो 1 है, राइट, अगर वो 1 है तो what I will do, I will print 1 here and I will print a 2 here. Okay. So this was more or less. So is the implementation part clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Okay. Yes, sir. This is going to run clean. So let's move on to our last question. So, okay. So this question says that this is the easy version of this problem. And you are given an array and it contains all distinct integers, like from b1 to bn, all are distinct, okay? And f of b is defined as the number of distinct integers x such that the following conditions are satisfied. X is greater than or equal to 1, okay? And there exist these pairs like I and j such that I is less than j, okay? That means that I, j and j, I are counted only once. ये जो कंडीशन है आई लेस देन जे, ये इसलिए दी जाती है कि तुम आई कॉमा जे और जे कॉमा आई को 2 बार काउंट ना करो, ठीक है. सिंपली मींस दैट कि इफ दिस इज द केस, सो यू हैव टू टेल कि वेदर a non-degenerate triangle can be formed with the side lengths as bi, bj and x, ठीक है. Okay, so a non-degenerate triangle is the one which has a positive area, okay? This is given to you. So you have to count, what you have to count is f of a. Okay, so you are given an array. And what is f of a? F of a is, yes, here, all the values of x which satisfy the condition. Okay. So like, let me explain the problem statement first. The problem statement says that, like, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन टू एन एरे इज गिवन, ठीक है, एन एरे इज गिवन और ऑल द वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है. So what I have to do, I have to find the count of x such that x is greater than or equal to 1, and also what was the other condition? Okay, so the other condition says that in throughout the array you choose 2 integers, any 2 values, let's say I call them bi and bj, okay, and this value x, okay. So x is going to be greater than or equal to 1. This is given. Okay. So when you choose these 3 values, you construct a triangle out of them. Okay. तो मान लेते हैं कि ये इसको मैं रीनेम कर, call it A, B and let's call it C. ठीक है. तो the problem says कि ये triangle की sides हैं. Let's say this is A, this is B and this is C. ठीक है. तो प्रॉब्लम इज आस्किंग कि क्या इन वैल्यूज ऑफ साइड के साथ, लाइक वेदर ए, बी एंड सी, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? इज दिस ट्राइंगल फीजिबल और नॉट, राइट? तो आई होप कि एलिमेंट्री मैथ्स में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इफ यू हैव टू चेक वेदर
like three sides can form a triangle with a positive area or not. So the thing is ki the sum of any two sides has to be greater than the third side, right? Similarly, this should hold for all the possible combinations, right? And this is like C plus A. Okay. So these are my three cases. Now let's explore them. तो मान लेते हैं कि I have to generate a positive area. ठीक है. Keeping this thing in mind, मैं क्या करूंगा? मान लेते हैं कि मैं कोई भी दो वैल्यूज पकड़ के लाता हूँ. ठीक है. एरे में से कोई भी दो वैल्यूज पकड़ के लाता हूँ and I call them as B and C. Then I have to find an X, right? I have to find a valid X for this pair. Okay. So let's name it as A. So A can be in a range, right? There's a possible range of A, right? Like let me like give you an intuition कि why there is a range. Obviously तुम अगर इसको थोड़ा सोचोगे तो तुम इसको ऐसे मान लो like take some values, ठीक है? मान लेते हैं B की वैल्यू 4 है and C की वैल्यू 2 है. Okay. So what can be the minimum value of A? That can be 1. ठीक है? And so on. तो कुछ भी हो सकती है. मान लेते हैं 1 है. तो is 1 possible? तो ये तीनों इनइक्वालिटीज लगा के देखो. तो B plus C is 6. Is 6 greater than 1? Yes. A plus B, like A is 1. So 1 plus 2, 3. So is 3 greater than 6? Sorry. C is 2, right? 3 is greater than 2. Okay, this is satisfied. This is satisfied. Now let's see this one. Like A is 1 and C is 2, 3. Is 3 greater than 4? No. That means that 1 cannot be taken. Okay. Now let's move to 2. क्या 2 ले सकते हैं? So these two conditions were satisfied for 1. That simply means that these are going to be satisfied for 2 as well. Okay, well, not necessary, you can check out. I'm just trying to cut down some time. Thing is कि ठीक है इसको मतलब ठीक है प्रॉपर्ली इसको ड्राई रन कर लेते हैं, नो इशू. Just a moment. तो what I was saying कि हाँ तो हम a equals to 2 के लिए देख लेते हैं. A equals to 2 के लिए if I name it first, second and third equation. If I first inequality, the first equality says that B plus C is greater than A. So this is 4 plus 2, 6. 6 is greater than A, right? Yes. Again, A plus B, 2 plus 4, 6. 6 is greater than C. Yes. And C plus A. What is C plus A? C plus A is 2 plus 2, 4. Is 4 greater than 4? No. Right? So this means that this third equation is not going to be satisfied. Let's take the next value. Let's take 3. तो obviously 3 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी. एंड ऑल्सो इफ आई टेक द थर्ड वैल्यू which is C plus A, 2 plus 3, that is 5. 5 is going to be greater than 4. So similarly, this means that 3 is the first value जिसके लिए I am having a valid answer, like I am having a valid triangle, right? तो अब तुम इसमें ये देखो कि let's try to find a range कि कितनी A की मैक्सिमम वैल्यू तक ये चीज चलने वाली है. ठीक है, तो A की मिन वैल्यू क्या हो गई? मिन वैल्यू ऑफ A इज 3. लेट्स ट्राई टू फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ A. तो अब तुम इसमें ये देखो कि कॉमन सेंस से तुम अगर देखना चाहो तो 4 के लिए तो काम कर ही जाएगा क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है ना. दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, राइट? तो दैट मीन्स कि जो भी इसमें से मैक्सिमम होगा कम से कम उस वैल्यू तक तो चल ही जाएगा, राइट? तो लेट्स सी उसके बाद वाली वैल्यूज पे, लाइक 4 is going to be an answer. Let's see on 5. So on 5, okay, so B plus C is going to be 9. 9 is greater than 2, yes. And A plus B, like A is 5 and B is 4. Again 9, it is again going to be greater than 2, right?
I have been taken 2 here. मतलब ये 2 नहीं होगा. Like I have to compare with A, right? This is 5. No matter. मतलब ये obviously true है, but ठीक है. I was making a mistake. So C plus A, what is C plus A? C plus A is going to be 5 plus 2, 7. 7 is greater than 4. Yes. 5 पे भी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है. Let's see on 6. Okay. Let's see on 6. Let's see on 6. So B plus C. B plus C 6. Is 6 greater than 6? No. तो ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई. इट सिंपली मीन्स दैट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है 6, तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली फर्स्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. यस और नो? तो दिस सिंपली मीन्स दैट देयर इज अ रेंज ऑफ ए जहां पर आंसर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एक वैलिड ट्रायंगल बनता है एंड दैट रेंज इज कंटीजियस. ओके, जस्ट अ मोमेंट. दैट रेंज इज कंटीजियस. ओके, सो अगर मैं तुमको ये बोलूं, ठीक है, कि मैं जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे, राइट, अगर मैं उन सभी पॉसिबल पेयर्स के लिए, अगर मैं उन सारे पॉसिबल पेयर्स के लिए क्या करता हूं कि like I take all the possible pairs of B and C and I found a minimum value and a maximum value like this range. ठीक है, range. तो this range, इसमें जो भी वैल्यूज आने आने वाली होंगी, so those values would be nothing but max minus min plus 1. Right? These number of values are going to contribute in my total count of x, right? X was like our motive जो हम find करने निकले थे, valid values of x. So these much values are going to contribute in my x, right? ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि like let's take an example. ठीक है, let's take this example 5 to 4 and 12. 5 to 4 and 12. Since the order doesn't matter, like let me sort them first of all. 2, 4, 5 and 12. ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं पेयरिंग इस तरीके से करूंगा कि आई विल टेक द एडजेसेंट वैल्यूज. आई विल टेक 2 and 4. I will take 4 and 5. I will take 5 and 12. Okay. So the thing is, I take 2 and 4, and for each thing, what I will do, I will like calculate a min value and a max value. Okay. So min value for 2, 4 is going to be, it is going to be nothing but 4 minus 2 plus 1. Why? Like how I came up with this intuition. तुम ये सोच के देखो कि B plus C has to be greater than A, right? तो अगर कोई और साइड जो मैं सर्च कर रहा हूँ, है ना, अगर उसको ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है, राइट, तो ऑब्वियसली उसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, अगर A एक ऐसी साइड होती जो कि मैक्सिमम थी, मतलब A was greater than B and C, तो मेरे लिए आंसर सिंपल था कि A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी यहाँ पे, B plus C minus 1, right? This is going to be maximum value of A, है ना. बट फॉर अदर इनइक्वालिटीज ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ए ग्रेटेस्ट साइड नहीं है. दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट साइड. ए ग्रेटेस्ट साइड नहीं है, मतलब या तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी वाली इनइक्वालिटी लग रही होगी, या फिर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी वाली इनइक्वालिटी लग रही होगी. तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को डिड्यूस करके यू कैन रीच अपॉन दिस कंक्लूजन
the min value of A would be nothing but difference of B and C, like the absolute difference -1 है ना? ऐसा क्यों हो रहा होगा? मतलब तुम इससे अगर रिड्यूस करने की कोशिश करो तो दिस सिंपली मीन्स दैट कि A should be greater than C minus B, and this things gives me A should be greater than B minus C. अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, this is nothing but absolute value of B minus C, right? And -1. Why -1? Because A has to be greater. So this value has to be like more smaller. I have to decrement it more. So this gives you an intuition that B mod C minus 1 is going to be my min value of A, right? This is my max value B plus C minus 1, and absolute of B minus C minus 1 is my min value. Okay? So far मान लेते हैं कि I have the range for all the pairs. ठीक है? तो जो भी मेरी values थी, what were my values? My pairs were where were my pairs? My pairs are 2, 4, 4, 5, and 5, 12. Okay. 2, 4, 4, 5, and 5, 12. Right. तो अगर तुम इसके लिए देखो, है ना? So what is my min and what is my max? Min is going to be 4 plus 2, sorry, difference of 4 minus 2, that is 2, 2 plus 1, 3. 5 minus 4, 1, 1 plus 1, 2. 12 minus 5, 7, 7 plus 1, 8. This is going to be min. Similarly, max per calculate kariye, so that is going to be 2 plus 4 minus 1, which is 5. 5 plus 4 minus 1, which is 8. And 12 plus 5 minus 1 is 16. Okay. So this simply means that if I try to tell you this on a number line, so my first range comes out to be from 3 to 5. 3 to 5. Agli range comes out to be from 2 to 8. And next one comes out from 8 to 16. This is a range. This is another range. And this is a range. So this is the scenario. ठीक है? But इसमें ऐसा भी हो सकता था, ऐसा हो सकता था, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि ये जो रेंजेस बन रही हैं, राइट, ये ओवरलैपिंग ना होती, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि एक रेंज ऐसे बनती और फिर कुछ वैल्यूज छूटी हुई होती और एक दूसरी रेंज बनती, ठीक है? सो फॉर ऑल दीज केसेस दैट मीन्स कि ये जो बीच में जो वैल्यू आ रही है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ दिस वाज माय नंबर लाइन, एक रेंज ऐसा होता एंड एक रेंज ऐसा होता. सो फॉर दिस सिनेरियो ये जो वैल्यूज बीच में छूट गई ना, these are not going to give me a valid triangle, right? कहने का मतलब ये है कि जो AI में जो वैल्यूज हैं, है ना, वो कुछ इस तरीके से रखी गई हैं कि there is no valid triangle for these value of x. Yes or no? ये चीज समझ आती है? Yes, sir. Because if I pick up any value from this is not going to make a valid tuple. I hope you are clear with what is tuple. Tuple is like a group of 3 numbers. So these are sides A, B, C. Okay. So it is not going to give you a valid tuple जो कि एक degenerate solution produce कर रहा होगा of triangle, right? But there can be Yes, sir. intersections. There can be intersections, right? So I just have to see. My claim is simple.
if any number on the number line, let's say that number is y, okay, if y lies in any range, right, any valid range, how should I say it, if I call it at min and a max, okay, look, this is very inappropriate, but to have a raw idea कि if कोई भी number y, if it is under the intersection of any range, है ना, it is going to give me a valid answer. मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब ये मत समझना कि this is the minimum of some range, this is the maximum of some range, इसके बीच में सारी वैल्यूज आंसर प्रोड्यूस कर रही हैं, नो, ये जो बीच वाली वैल्यूज है ये आंसर प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, राइट. So what I have to see, I have to be very specific. I have to see range wise. मतलब I don't know कि ranges continuous है या discrete है ना? Whether the ranges are continuous or discrete. So what I have to see, I have to just count the numbers skillfully. ठीक. उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कुछ prefix sum जैसा, not exactly prefix sum, एक हम इसमें ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि इफेक्ट कहाँ तक रहता है किसी भी नंबर का. मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये एक कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब रेंज ऑफ नंबर्स है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, दिस इज माई नंबर लाइन, ठीक है. और मैं मान लेता हूँ कि कोई भी मेरे पास एक रेंज है, मेरे पास मल्टीपल रेंजेस होंगी, राइट, उसमें से कोई एक रेंज है विच सेज माई आंसर लाइज इन 2,5, ठीक है. Obviously this is closed, मतलब 2 and 5 included. So this range says that कि 2 and 5 के बीच में जो भी नंबर आएगा, no matter what, it is going to be an answer, है ना. तो अब तो इसमें ये देखो कि 4 वैल्यूज आर देयर जो कि मेरा आंसर हो सकती हैं, ठीक है. तो कहने का तात्पर्य ये है कि sorry, I forgot what I was trying to tell you, ठीक है, but the thing what I want to convey is जस्ट अ सेकेंड, मतलब मैं क्या कहना चाहता था मैं थोड़ा भूल गया. हाँ, हाँ, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू मतलब आई वॉज ट्राइंग टू डिपिक्ट की if these are continuous values, ठीक है, if these are continuous values, if these are continuous values, so what I was trying to depict you, हाँ, मतलब I was trying to depict you something like effect. हाँ, तो effect means कि यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस हो सकती है, लाइक excuse me guys, sorry. तो what I was trying to say is कि यहाँ पे क्योंकि अब तुम इसको ऐसे अगर समझो कि मैं अगर पूरी नंबर लाइन को देखता हूँ, है ना, तो अगर इफ आई एम ट्रेवर्सिंग ओवर दिस नंबर लाइन एंड व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पे एक +1 मार्क कर देता हूँ और इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर पे दैट इज 6 यहाँ पे एक -1 मार्क कर देता हूँ, है ना. तो दिस मीन्स दैट अभी मान लेते हैं एक ही रेंज है, ठीक है. तो फॉर ऑल द नंबर्स इन द नंबर लाइन where my status is greater than 0, can I include them in my answer? Like, did you get Yes, this sir. thing? Yes, sir. Yes. कहने का मतलब ये है कि as soon as like I begin from 1, मेरा भी status 0 है, ठीक है, I take it as 0. As I come on 2, I do a +1. Why? 2 is the starting point and 5 is the ending point and 6 is the point जहाँ पे
ये जो रेंज है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लाइक 5 इज द लास्ट नंबर जहाँ पे यस सर, तो सब ये कंटिन्यूस रेंज का इफेक्ट आ रहा होगा, राइट? एंड 6 is going to be my number जहाँ पे I will do a -1 to neutralize this +1, right? So this is just kind of trick we generally like more frequently use in CP to count the numbers in some common ranges, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे अगर मल्टीपल रेंजेस होते हैं, है ना, मल्टीपल पेयर्स ऑफ रेंजेस होते हैं जहाँ पे मैं उनको अगर स्टार्ट और एंड टाइम से अगर मैं क्लेरिफाई करूँ दैट दिस इज माय स्टार्ट और एंड, एंड टाइम नहीं मतलब एक रेंज बोल लो, ठीक है? तो देयर कैन बी मल्टीपल रेंजेस लाइक दिस, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हर स्टार्ट वैल्यू के लिए अगर मैं एक +1 मार्क करूं और हर एंड वैल्यू के लिए मैं एक -1 मार्क करता हूं, ठीक है? तो नो मैटर मैं नंबर लाइन पे कहीं भी खड़ा हो जाऊं, ठीक है, आई स्टैंड ऑन एनीवेयर ऑन दिस नंबर लाइन एंड आई वांट टू सी कि whether y is included in my answer or not. I just have to check my current status. If that status is going to be greater than 0, that simply means that I can include y in my answer, right? Yes or no? यस सर। सर ठीक है, प्रीफिक्स सम से इसको देखेंगे। हाँ मतलब प्रीफिक्स सम जैसा ही है, मतलब इंट्यूशन अगर तुम लेना चाहो तो कुछ वैसा ही आता है ना? यस यस मतलब इट्स मोर ओवर लाइक कि किसी चीज का इफेक्ट एक सर्टेन पॉइंट पे शुरू होता है, सर्टेन पॉइंट पे खत्म हो जाता है, तो दैट इज अ रेंज, है ना? हो सकता है कोई ऐसी रेंज होती जिसका इफेक्ट यहाँ शुरू होता और यहाँ खत्म होता। दिस मीन्स दैट फॉर numbers here between this and this I am at the status +1, यहाँ पे मैं +2 पे हूँ, right? Here I am at +1 and here again I am at 0, ठीक है? 0 यस Simply means that कि I am going to count all the values where my count is greater than 0, the current state is greater than 0. अब I don't need to iterate over whole number line, right? I just need to see what is my uh, minimum starting time and maximum ending time, right? Yes or no? यस सर तो यस अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को एनालाइज करूं, दिस इज गोइंग टू कंटेन ऑल माय रेंजेस, जो भी मेरी रेंजेस होंगी, राइट? ठीक है, तो अब तुम इसमें ये देखो, इफ आई गो वन बाय वन, if I iterate over the number line, it is going to give me a TLE, है ना? हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाए, तो फॉर एलिमिनेटिंग दिस थिंग व्हाट आई कैन डू इज, तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि ऑब्वियसली इफ यू नो स्टार्ट एंड एंड, है ना, तो number of values which are present in that range are nothing but end minus start plus 1. Yes or no? है ना? But the यस सर thing is to count them wisely. अब मैं क्या करूंगा, to count them wisely what I will do is let me demonstrate you what I'm trying to say. मान लेते हैं कि ये मेरा एक रेंज है, ठीक है, और ये एक दूसरा रेंज है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, नो डाउट, आई एग्री विद दिस थिंग, ठीक है? बट ऐसा भी हो सकता था कि रेंजेस डिसजॉइंट होती, है ना? सो फॉर कवरिंग ऑल दीज केसेस आई एम प्लेइंग अ मूव क्लेवरली। पहली चीज तो तुमको ये समझाया कि आई विल मेक अ +1 हेयर, अ +1 हेयर, -1 हेयर एंड अ -1 हेयर, नॉट हेयर एक्चुअली, मतलब एक इसके बाद वाली वैल्यू पे, मतलब लाइक आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन ओपन ब्रैकेट, इस तरीके का मैं कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मतलब ठीक है, वो चीज तुमको समझ आती है कि आई विल डू अ -1 हेयर, दैट इज ऑन इम्प्लीमेंटेशन, तुम कैसे भी करो। तो ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा करूं कि रेदर देन काउंटिंग
if I take this as start and this as end, so rather than counting end minus start plus 1, and then if I name it as start 2 or end 2, if I count as end 2 minus start 2 plus 1, this is going to contain common values, right? Yes or no? Sir, but repeated value is also counted, na? हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो 2 बार काउंट हो जाएंगी ना, Yes, sir. है ना? तो फॉर एलिमिनेटिंग दैट थिंग, मतलब ये इट इज अप टू यू, ठीक है? आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक, आई हैव टोल्ड यू कि रेंजेस बन गई हैं। अब तुम काउंट कैसे करते हो क्लेवरली, दैट इज अप टू यू। आई एम टेलिंग यू वन वे आउट ऑफ दैट, दैट इज सिंपली कि तुम इस रेंज को देखो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं एंड पॉइंट्स को देखता हूँ, आई एम कंसिडरिंग ओनली एंड पॉइंट। आई डोंट केयर वेदर इट इज अ स्टार्ट और इट इज अ एंड एट एनी सिनेरियो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ आई एम एट एन सम पॉइंट, तो मैं उसके क्लोजेस्ट वाला पॉइंट देखूंगा, है ना? मतलब ये उसके क्लोजेस्ट पॉइंट है और इसके क्लोजेस्ट पॉइंट ये वाला है, इसका क्लोजेस्ट पॉइंट ये वाला है, राइट? आई वोंट बी सीइंग एट द वैल्यू जो उसके पीछे है ना? तो इससे होगा क्या कि इससे जो ये सिर्फ इतना पोर्शन मैंने काउंट किया, फिर इतना काउंट किया, फिर इतना काउंट किया, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव माई टोटल आंसर, है ना? बट ऐसा भी हो सकता था कि ये जो बीच की वैल्यू है ये ना होती, है ना? तो दैट केस इज ऑल्सो कवर्ड हियर। फॉर दैट पर्पस आई एम ट्राइंग टू से कि तुम ऐसा मानो कि तुम हर एक को हर एक को एस एन एंड और स्टार्ट मानो। मतलब कि जो पॉइंट आगे है उसको तुम एंड मान लो और जस्ट उसके पीछे जो था उसको एक स्टार्ट मान लो, है ना? मतलब लाइक 2 पॉइंटर्स, दिस इज माई करेंट, दिस इज माई प्रीवियस। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो। तो तुम हमेशा ये कह सकते हो, बट हाँ, कंडीशन वुड बी कि तुम्हें स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि इफ योर स्टेटस इज ग्रेटर देन 0 एंड यू लैंड ऑन अ एंड पॉइंट, ठीक है? मतलब लाइक क्रिटिकल पॉइंट्स बोल लेते हैं, नॉट एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल लेते हैं, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स दैट कैन बी आइदर अ स्टार्ट और एन एंड, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर तुम किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे लैंड ऑन करते हो एंड यू फाइंड कि योर स्टेटस ग्रेटर देन 0, व्हाट यू कैन डू? You can do a current minus previous plus 1. Yes or no? So this is just going to give you continuous number of values just between the two critical points which are adjacent. So अब मेरा I don't care कि those critical points are continuous or like these all are covered, है ना? मतलब range is like this or like this, ठीक है? So these all critical points are continuous, or if this is the scenario, these are critical points, but this is my range, I don't care. I will just see my status. Okay. Like here my status is going to be +1, here 0 and a +1. यहाँ पे status +1, +2, +1. तो यहाँ पे सारी values count on हो जाएंगी. Why? Status is greater than 0. But यहाँ पर ये values count नहीं होंगी. ये count हो जाएंगी, ये count हो जाएंगी. Is this thing clear now? How I am counting these values? ये चीज समझ आती है? यस सर। ठीक है। सर इसमें हाँ, उसको एलिमिनेट कैसे, जहाँ पे मतलब आ नहीं रहा है, जो पॉइंट्स मतलब इंक्लूड नहीं करने हैं, बीच में है अगर वो, उसको एलिमिनेट कैसे किए? उसको हम एलिमिनेट ऐसे किए ना, हम क्रिटिकल पॉइंट्स मानो, तुम किसी को स्टार्ट और एंड मानो ही ना, तुम मानो कि बस क्रिटिकल पॉइंट्स है। मतलब जहाँ पे वेवी कर्व मेथड पढ़े हो, वेवी कर्व मेथड छोड़ो, मतलब ठीक है, मतलब फॉरगॉट दैट थिंग कि क्या है वो,
मतलब ओके, मतलब मान लेते हैं कि दीज आर माई क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, या तो यहाँ पे +1 होगा या यहाँ पे -1 होगा, है ना। मेरा Yes, स्टेटस sir. बिट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो आई डोंट केयर। मतलब अगर यहाँ पे -1 होना होगा तो मुझे इसकी पहले की वैल्यूज कंसिडर करनी थी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और अगर +1 होना तो इसके बाद की वैल्यूज कंसिडर करनी थी, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग कि तुम बस दो एडजेसेंट क्रिटिकल पॉइंट्स को देखो और तुम अपना करंट स्टेटस देखो। तो अगर तुम्हारा स्टेटस पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि तुम अभी तक किसी ना किसी +1 के इफेक्ट में रहे होगे। यस और नो, कोई तो ऐसा Yes, sir. +1 होगा जिसके इफेक्ट में होगे, मतलब कि तुम उन वैल्यूज को काउंट तो कर सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर ये Yes, sir. पूरा रेंज मुझे काउंट करना होता, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रेदर देन डूइंग कि तुम इस वैल्यू को उठाओ और इस वैल्यू को उठाओ और दोनों को -1 करके +1 करो, तुम इन वैल्यूज को उठाओ छोटे छोटे टुकड़ों में। यू डू इट पीस वाइज, यू काउंट दीज वैल्यूज फर्स्ट, While check. these values and these values, and simultaneously you have to check your status। Yes, sir. ठीक है, तो अगर कहीं पर भी तुम नेगेटिव हुए या फिर तुम 0 हो गए, है ना, उसको तो काउंट कर देंगे. दीज केसेस आर कवर्ड, यू डोंट हैव टू काउंट देम, है ना। Yes, मतलब sir. नेगेटिव तो नहीं हो रहा होगा, मतलब 0 ही हो रहा होगा, बट ठीक है, राइट। Yes, sir. तो दिस इज द सो फार एक्सप्लेनेशन। अब इसमें मैं टीएलई से इसलिए बच गया क्योंकि मैं जस्ट ये करूंगा कि आई विल जस्ट आइटरेट ओवर दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। आई डोंट हैव टू गो थ्रू द होल नंबर लाइन, बस मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को देखूंगा, है ना। एंड दोज क्रिटिकल पॉइंट्स वो ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि मैं हर पेयर के लिए सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी मच, तो मैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे आइटरेट करूंगा और देख लूंगा कि मेरा स्टेटस क्या है ना। और आई विल सी कि मतलब जो बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट लाइक करंट वैल्यू, करंट क्रिटिकल पॉइंट माइनस प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट एंड अ +1। दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर सो फार। ठीक है, तो इज द एक्सप्लेनेशन क्लियर ऑफ द प्रॉब्लम? Yes, sir. I hope that is indeed clear. So let's move to the implementation part. तो मैं तुमको यहाँ से समझाता हूँ कि just give me a moment. Let me make it a more cleaner code. So let's start from here कि like we are taking the test cases and calling the solve function, है ना। अब तुम इसमें ये देखो, we have taken the inputs. So I have taken the input here. So this is nothing but a vector of integers. You can take it.
और तुम यहाँ पे इनपुट ले लो अपना नॉर्मली, ठीक है। तो यू आर टेकिंग द इनपुट्स हियर एंड आई एम सॉर्टिंग इट, क्योंकि बिकॉज द ऑर्डर डजंट मैटर ऑफ द जो वैल्यूज दी हुई है एआई। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लाइक सॉर्ट दिस। तो ये सॉर्ट कर लो। और व्हाट आई हैव टेकन, मैं यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज रेंज? रेंज इज अ वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है। व्हाट इज दैट गोइंग टू स्टोर? ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर मतलब वो मेरा स्टार्ट और एंड टाइम स्टोर करेगा, है ना। एंड इट इज गोइंग टू स्टोर हेयर इज लाइक रेंज स्टोरिंग critical point and status. Status can be +1 or a -1, ठीक है। तो this is like a vector of pair, ठीक है। int comma int, ठीक है। This is my vector of pair, and what I have done, I have like to fill these ranges pairwise. I have written a separate function जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना वेक्टर v और साइज ऑफ वेक्टर n पास कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी दिस फाइंड रेंज. What I'm doing in find range is I'm returning a vector of pair again here, ठीक है। I'm returning a vector, return type is vector of pair, ठीक है। तो I have taken my vector and the size. तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि I am iterating over the values, like I'm seeing the adjacent values, ठीक है। Because these are the only values I'm going to concerned about, ठीक है। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पेयर होगा that is going to give me min start time and last like the max end time would be given by the last pair, ठीक है। तो these are the only values I'm concerned about. So to mark the critical points, what I will do, start would be nothing but absolute difference -1, right? What are my absolute difference -1? तो मेरा b और c क्या है? b is vec of I and c is vec of I +1, ठीक है। तो सिंस दीज आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो वेक ऑफ i+1 ग्रेटर होगा तो c - b+1, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज माई स्टार्ट, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। और एंड तो इज लाइक कि एंड इज b+c-1, है ना। बट आई विल डू अ स्टेटस ऑफ -1 एट एंड इक्वल्स टू b+c, ठीक है। क्योंकि उसका जो इफेक्ट है +1 का, वो खत्म कहाँ पे होगा, वो एंड +1 पे खत्म होगा, विच इज इवेंचुअली b+c, है ना। तो मैं अपने रेंज में ये पुश कर लूंगा दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स स्टार्ट और एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेटस बिट्स, ठीक है। एंड आई विल रिटर्न रेंज द वेक्टर ऑफ पेयर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर जाता हूँ एंड आई विल सॉर्ट माई रेंज, ठीक है। तो रेंज को भी मैं सॉर्ट कर लूंगा। I will sort them. I will sort them to have the minimum starting time and max end time. So this is the only two critical points जिनके बीच में मुझे iterate करना है, right? तो sorting helps me to achieve that. तो इसलिए मैं इसको sort कर लेता हूँ। ये vector of pairs है ये, remember this. तो अब मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स ले लिए हैं, मतलब 2 पॉइंटर्स है इसमें, प्रीप एंड कर, ठीक है। दीज आर पॉइंटर्स। तो दीज आर पॉइंटर्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को ये ट्रैक करेंगे, एंड क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आंसर क्या होगा, कर माइनस प्रिव +1, ठीक है। और टोटल इज गोइंग टू काउंट माय टोटल वैलिड x वैल्यूज, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई एम आइटरेटिंग ओवर रेंज, ठीक है। आई एम आइटरेटिंग ओवर रेंज
So range is a pair. So if this is my iterator u, so u dot first is going to give me a critical point. Critical point. Okay. This is my current position, critical point. Okay. And type, let me rename it as like status. Okay. Status. Okay. तो ये जो मेरा स्टेटस है, दिस इज आइदर अ +1 और अ -1. ठीक. अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरा प्रीवियस -1 से इनिशियलाइज किया है, मतलब कि प्रीवियस -1 नहीं है ना, दैट मीन्स कि आई हैव एनकाउंटर्ड प्रीवियसली a critical point and status is greater than 0. Okay. Status means this current value. Okay. Why this current? Because ultimately I am adding this status in my current. ठीक है. तो मैं इस current से ट्रैक रखूंगा my status का. तो if my current is positive, ठीक है, greater than 0. So what I will do? I will include current position minus this previous in my answer. है ना? कर माइनस प्रिव +1 क्यों नहीं? क्योंकि मैंने -1 जो मार्क किया है ना, मैंने -1 मार्क किया है किसको? कर +1 को, है ना? एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट प्रिव फ्रॉम हियर, तो इट इज एज गुड एज कर माइनस प्रिव +1. So it is more or less the same thing. So these many values I am going to add in my answer. ठीक है. एंड एट लास्ट व्हाट आई विल डू कि मैं अपने कर में स्टेटस जोड़ लूंगा जो भी मेरा अगला क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके लिए, whether it is +1 और a -1. तो कहीं पर भी अगर ये मैं जो भी this is like, if this is positive then I will include this, else I won't, and I will update my previous with the current one, and ultimately I'm going to print my answer. So is the implementation clear so far? Right? Okay, so I'm having a vector of integer here. I have to implementation clear है. Like, don't get on these compilation errors. This is just because I have rewritten this code. Just tell me whether the implementation is clear or not. Yes, sir, clear है. Okay. Okay, so I guess that was all. Some runtime error is there, but I will give you the correct code. I have just rewritten here. Okay. So this is the idea so far. So that was all for the discussion. So thank you everyone.